गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी को बुकशेयर की तरफ से नमस्कार। ये 12th ऑनलाइन एक्सेसिबल रीडिंग वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। वी वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस 12th workshop of the online accessible reading series. As usual, we have the Bookshare team standing by to support. We have the membership team headed by Zainab, Sanjog, Sia, and our technical expert Sushant. हर बार की तरह हमारे साथ हमारी बुकशेयर की टीम भी आपके साथ मौजूद है। मेंबरशिप टीम से जैनब, संजोग और सिया और हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट सुशांत भी हमारे साथ मौजूद है। इस बार एक और गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है नील, और नील हमारे साथ कैश रीडर की जो डेवलपमेंट टीम है उनकी तरफ से मौजूद है। तो जब हम आज कैश रीडर और बाकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे उस वक्त वो हमारे साथ अपना परिचय देंगे और हमसे बात भी करेंगे। So over and above the Bookshare team, we have Neil with us, who represents the application Cash Reader. He is from the development team, and he will speak to us as and when we start talking about the Cash Reader. So today we are going to talk about 4 applications, time permitting. Number 1, we are going to talk about Voice Dream Reader. Voice Dream Reader is a very flexible DAISY EPUB reader which also supports Word and PDFs. So सबसे पहले हम बात करेंगे Voice Dream Reader की, जो एक बहुत ही flexible book reading application है जो DAISY books, EPUB books और Word और PDF files भी वो पढ़ने में सक्षम है। तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे विस्तृत में। उसके बाद हम देखेंगे करेंसी आइडेंटिफायर्स को, और ये करेंसी आइडेंटिफायर्स जो है हम 3 करेंसी आइडेंटिफायर्स आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। कैश रीडर हम डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं और उसके अलावा मनी और कितना, ये 2 और एप्लीकेशंस है वो हम यूज करेंगे। So and about the voice stream reader, we are also going to demonstrate 3 currency identifiers. Cash reader, which is an currency identifier which identifies many currencies across the globe. And then we have got 2 India specific currency identifiers called money and Kitna. Before we go to the demonstrations, there are a few important points that I would like to announce today. Number 1, today we have started a new service by which those who do not have connectivity to the internet or have a patchy connectivity to the internet can also join in by dialing a number. This service is on for participants from India, Philippines, Sri Lanka, and Pakistan. Unfortunately, Zoom does not provide any dialing facilities for Nepal, Bhutan, and Bangladesh at this point. So आज एक बहुत अनोखा प्रयास हमने शुरू किया है कि जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है या कमजोर है, वो भी आज से हमारे ये वर्कशॉप्स में डायल करके, फोन से एक नंबर डायल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये फोन नंबर्स आपको आपके जो इनविटेशन भेजा गया है उसमें हमने लिख के भेजे हैं। तो ये सर्विस जो है इंडिया के अलावा फिलीपींस, श्रीलंका और पाकिस्तान के लिए उपलब्ध है। फिलहाल नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के लिए ये सर्विस जूम की तरफ से उपलब्ध नहीं करवाई गई है। तो ये 3 राज्यों से अगर कोई जुड़ रहा है हमारे साथ तो उनको बाकायदा हमारे साथ इंटरनेट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। Second announcement is we are also inviting suggestions from all the participants as to what more would you like to be demonstrated, or in the future programs, what are the type of programs that you would like us to present for you, or you would like us to bring the developers and get them presented for you.
So during the question answer session, please feel free to voice your opinions. Please feel free to voice your views and tell us what programs would you like us to host in the future. एक और चीज हम आपसे रिक्वेस्ट करने वाले हैं आज, और वो है कि आगे आने वाले प्रोग्राम्स में आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं, किस टाइप के प्रोग्राम्स की उम्मीद करते हैं, आप किस टाइप के डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह चाहते हैं। तो जब सवाल जवाब का सेशन शुरू होता है, क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू होता है, उस वक्त हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चाहे तो अपने व्यूज रख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आप किस टाइप के प्रोग्राम्स फ्यूचर में चाहते हैं। तो ये दो जानकारी के साथ चलिए हम वॉइस ड्रीम रीडर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वॉइस ड्रीम रीडर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट वॉइस ड्रीम रीडर। तो अब हम वॉइस स्ट्रीम रीडर को ओपन करेंगे। Outlook. Reader. Screen recorder. Reader. So now we are going to open voice stream reader. On your home screen, voice stream reader will show as reader. आपका जो होम स्क्रीन होगा उसके ऊपर सिर्फ रीडर के नाम से आपको वॉइस स्ट्रीम रीडर मिलेगा। तो वहां हम एंटर कर रहे हैं, डबल टैप कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू डबल टैप ऑन इट। Reader. Voice stream reader. Reader. Select a voice. So सबसे पहले वो हमें एक वॉइस सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है कि आपको किस चीज से पढ़ना है। So the first screen is, it is asking you to select a voice which is going to be your default reading voice. So you can select your Google TTS over here, or you could use Auto TTS. आप यहाँ पे Google TTS या Auto TTS select कर सकते हैं। बहुत सारे voices के option है। Voice stream reader comes with one high quality voice of your choice. For your language, the most popular male and female voice are listed below. Voice files are large. Please download over a good Wi-Fi network and be patient. तो ये कोई भी एक वॉइस फ्री होगा, बाकी अगर आपको एक से ज्यादा वॉइसेस चाहिए तो वो आपको बाय करना होगा। तो one voice comes in completely free. You can select any one voice, or for other voices, if you want to buy multiple voices for reading, you will have to buy the second voice, or you will have to uninstall the first one and then select another one. So right now we are going to skip this. Language. Drop down menu, English. Voice. Drop down menu, Rona, Scottish for language. Download button. Play sample button. Other voices button. Skip button. तो हम फिलहाल ये सेटिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ स्किप करेंगे जिससे हम ये रिकॉर्डिंग को आगे बढ़ा सके। Alert, are you sure? If you skip the voice selection and download step now, you will not be able to read documents via text-to-speech until at least one voice is downloaded via the Manage My Voices page within the app. We strongly recommend you select and download a voice now. तो ये कह रहा है कि अभी फिलहाल अगर आप ये स्किप कर दोगे तो बाद में आपको ऐड अ वॉइस करना पड़ेगा, उसके बिना आप कोई टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते हो। So it's warning you that if you do not download a voice right now, you will not be able to read any voices, or sorry, text without downloading a particular voice. So let's go ahead. We don't want to do it right now. Go back button. Skip button. Reader. Quick reference. Web view. So it is now opened a quick reference. So let's see what is there in the quick reference. Voice stream reader quick reference, heading 1. Reader view, basic gestures, heading 2. So these are all the shortcuts. ये स्क्रीन के ऊपर आप अगर ध्यान से देखोगे तो सारे शॉर्टकट्स वगैरह जो है, एक्शंस, जेस्चर्स वगैरह आपको मिलेंगे। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप जब इंस्टॉल करो तो इसको ध्यान से पढ़ें। Bullet. Single tap. Toggle full screen mode. Bullet. Double tap. Start reading from the double tap position. Bullet. Two finger tap. Return to the current cursor location if not shown, or stop reading cursor is shown. So all these are different settings that, or gestures, which voice stream reader offers. What I would suggest is once you install your app, you should read these carefully. We will not go through all of these right now. We'll just skip them. Done button. We'll just press the done button. Reader. All items 1/1. So अभी हमने जो इनिशियल सेटिंग्स है उसको स्किप करके हुए आगे आ गए हैं। तो
हमारा जो मेन स्क्रीन है वहां आ गए हम. All items 1/1. So now we have skipped all the basic settings and we have come to the main screen of Voice Dream Reader where it is showing all items 1/1. So let's go further. Bookshelf view. So ये बुकशेल्फ व्यू है, ये आपका प्राइमरी व्यू है. जब भी आप वॉइस स्ट्रीम रीडर खोलोगे तो आप बुकशेल्फ व्यू में उसको खोल सकेंगे. Sort. सॉर्ट इज बेसिकली आपको अगर बहुत सारी बुक्स आपकी है तो उसको फाइंड करने के लिए, सर्च करने के लिए, मोस्ट रीसेंट वगैरह आपको अगर सॉर्ट करनी है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं. सॉर्ट ऑप्शन कैन बी यूज्ड इफ यू हैव गॉट मल्टीपल बुक्स डाउनलोडेड. You can actually sort the books according to most recent, etc. from here. More options button. And we'll just see what is there in the more options, which is the top right option. So we are going to go into that. Reader on top, reader on bottom. Manage my voices in list. तो जो voices का option आपने जो initial screen पे देखा था, वो यहाँ से भी आप कर सकते हो. Manage my voices के अंदर से. So we had skipped the setting of manage voices right at the start of the installation. You can also do it here from the my options, more options button. Content sources. जो दूसरा ऑप्शन है that is content sources. Content sources means आप कहाँ से बुक्स को डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हो तो वो सिलेक्ट करना है. So this content sources is a collection of different sources from where you would like to search for your books. So let's go into that. Reader. Content sources. Navigate up button. So let's swipe. Content sources. Bookshare in list. Off switch. तो ये बुकशेयर सबसे पहला ऑप्शन है. जो ऑफ है उसको हम ऑन करेंगे. बुकशेयर इज द फर्स्ट ऑप्शन व्हिच इज ऑफ बाय डिफॉल्ट. वी आर गोइंग टू डबल टैप एंड स्विच इट ऑन. Bookshare login. Editing email or username edit box. So it is asking you for your email. This email will be your Bookshare user ID which is sent to you by the membership team of Bookshare. ये यहाँ पे आपको आपका वही आईडी डालना है जो आपने Bookshare के साथ रजिस्टर किया है. तो हम यहाँ टाइप करते Password हैं. edit box. Editing email or username edit box. तो यहाँ हम हमारा यूजर आईडी टाइप कर रहे हैं. R end of field. Full stop end of field. H end of field. P end of field. End of field. O end of field. तो हमने जब बुकशेयर में साइन इन कर दिया और दोबारा मेन स्क्रीन पे आ गए तो हमें ऐड बुक पे जाना है अभी. तो ऐड बुक के लिए हम लेफ्ट टू राइट स्वाइप करेंगे. सो वंस वी आर साइंड इन टू बुकशेयर वी केम बैक ऑन टू द मेन स्क्रीन एंड नाउ वी वांट टू ऐड अ बुक फ्रॉम बुकशेयर. सो वी नीड टू फाइंड द ऐड बुक बटन. Bookshelf view. So this is the bookshelf view at the top. Sort. Sort. More options button. Search button. Pride and Prejudice 12:34:14, Jane Austen. So Bookshare voice stream comes with one book already downloaded which is a demo book which is Pride and Prejudice. ये एक बुक जो है Pride and Prejudice जो एक डेमो बुक है वॉइस ड्रीम की तरफ से, वो हमेशा आप जैसे इंस्टॉल करोगे तो वो आपके पास होगी ही. Add document button for add document. और उसके बाद जो है add document आपको मिलेगा. So this is the add document button which we want to take for finding books from Bookshare. Choose file in list. अब यहाँ पे जब हम डबल टैप करते हैं तो हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं कहाँ से आपको बुक डाउनलोड करनी है. Web browser. वेब ब्राउजर से अगर आपको बुक डाउनलोड करनी है, जैसे आप कुछ इंटरनेट के ऊपर है तो इंटरनेट के ऊपर आप जब क्रोम में कुछ पीडीएफ फाइल वगैरह है वहाँ ऑप्शंस में जाके शेयर, और शेयर में आप वॉइस ड्रीम रीडर से करोगे तो वो वॉइस ड्रीम रीडर में आपकी पीडीएफ वगैरह खुल जाएगी. सो इफ यू सिलेक्ट वेब ब्राउजर and if you are opening that file using Chrome and if you found a PDF file on the web, then you can use Chrome and use the share option, and under the share option share with voice stream reader and you should be able to open that file here. But we are not looking at that right now. What we are looking at is Bookshare. So हम एक और स्वाइप करते हैं Bookshare के लिए. Bookshare. तो ये Bookshare आ गया, हम डबल टैप कर रहे हैं. Reader. Categories. Navigate up button. तो ये एक स्टैंडर्ड बुकशेयर का जो एप्लीकेशन के साथ जो खुलता है पेज, उस टाइप का पेज है. दिस इज अ स्टैंडर्ड पेज व्हिच ओपन्स अप विद नॉर्मली ऑन ऑल एप्लीकेशंस यूजिंग बुकशेयर. सो लेट्स सी उसमें क्या क्या है. Categories. Search button. तो ये सर्च बटन है. अब यहाँ पे ये सर्च बटन जो है वो
किस चीज के साथ काम करेगा, वो जो नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, Selected title button. तो ये सिलेक्टेड टाइटल है। अगर यहां आप अभी सर्च करोगे तो वो सिर्फ आपको टाइटल से ही सर्च करने को हेल्प करेगा। So what is happening here is the title bar is selected over here. That means if you search anything, it will search by title. But if you select Author button. author, तो फिर ऊपर जब सर्च में आप किसी ऑथर का नाम लिखोगे तो वो ऑथर से सर्च करेगा। ISBN button. या अगर आप ISBN सिलेक्ट करोगे और फिर ISBN नंबर ऊपर सर्च में डालोगे तो ISBN से सर्च करेगा। So these are three different ways of selecting either title, author or ISBN to do your search. Full text button. After that there is full text Popular in and list. popular. So that means all the popular books will be listed here. यहाँ पे ये popular books का जिक्र किया गया है। जो बुकशेयर पे सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबें हैं वो यहाँ पे अगर आप पॉपुलर में जाओगे तो वो आपको सारी दिखाएगी। लेटेस्ट बुक्स में बुकशेयर क्योंकि हर महीने 5 से 7 हजार बुक्स ऐड करता रहता है, तो ये लेटेस्ट बुक्स है जो आप देख सकते हैं। लेटेस्ट कैटेगरी वेयर यू कैन सी ऑल द रीसेंट बुक्स व्हिच आर एडेड ऑन बुकशेयर। बुकशेयर एड्स मोर देन 5 to 7,000 books every month. So this is where you can see all the latest additions to Bookshare. Grades. Grades जो है ये अमेरिकन ग्रेड सिस्टम के हिसाब से हैं, जो वहाँ के हिसाब से टेक्स्ट बुक्स को ग्रेड करके दिखाया गया है, जो हमारे लिए इंडिया में इसका कोई काम नहीं है। Grades is a system where it will show you all the books from Bookshare which are read in America, which are prescribed in American schools. So that is not useful over here. Categories. Categories. This will demonstrate all the different categories which are there on Bookshare. So there are about 50 different categories. If you want to read a specific category like history or science or romance or religion, you should go into their category and then select that particular category. कैटेगरी में जो बुकशेयर के ऊपर जो सारी किताबें एक अलग अलग कैटेगरीज में विभाजित की गई है वो सारी आपको दिखाएंगी। जहां पे आप हिस्ट्री, साइंस, रोमांस वगैरह अलग अलग कैटेगरीज है। अगर आप किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे तो उसके अंदर जितनी भी किताबें होती है वो सारी की सारी आपको दिखाएगा। Periodicals. Periodicals इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ अमेरिकन लॉगिन के लिए है फिलहाल। So this is Periodicals, which is again not available for India. It's only available for users who log in from the US. History. History is going to show you all the books that you have downloaded. Even if you have downloaded from other devices, it should show you under the history over here. So if you have downloaded a book on your laptop, it will still show you over here. And then you can directly double tap on that without going into any other search. So that is the advantage of history. हिस्ट्री से क्या होता है कि अगर आपने किसी और डिवाइस पे या लैपटॉप पे आपने कहीं सर्च करके कोई बुक डाउनलोड करी है बुकशेयर से, तो वो सारी सर्च हिस्ट्री से जो जितनी भी बुक आपने डाउनलोड करी है वो सारी आपको हिस्ट्री के अंतर्गत मिलेगी, जिसे आपको दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे ऑप्शंस आपको बुकशेयर के जो पेज पे मिलते हैं। तो चलिए हम सर्च करके कोई टाइटल को ढूंढते हैं। तो हम दोबारा ऊपर जाते हैं। We are going back up. 600 video in here. Grades. Late. Popular. Full text. ISBN. Author button. Selected type. Search button. तो यहाँ सर्च के अंदर हम NCERT 12 लिखेंगे, जिसे NCERT की 12वीं कक्षा की कोई एक बुक को हम डाउनलोड करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। So here we are going to download a book for the National Curriculum for India for grade 12 and see how we can read that. So let's type in NCERT 12 over here. So I've double tapped on it. N C E R T. Insert. 1 2. Navigator button. So now it is showing me all the books which are under this category. Biology Class 12 NCERT National Council of Educational Research Training in list. तो ये पहली किताब जो आई है वो बायोलॉजी की है। और भी देखते हैं। Download button. उसके नीचे डाउनलोड बटन है। Psychology Class 12 NCERT Training National Council of Educational Research. ये साइकोलॉजी की किताब है। Download button. Bharatiya Samaj Class 12 NCERT National Council of Educational Research Training. ये हिंदी में भारतीय समाज की किताब है।
Download button. इसका डाउनलोड ऑप्शन है यहाँ पे। Introductory Microeconomics Class 12 NCERT, National Council of Educational ये Research माइक्रो Training. इकोनॉमिक्स की किताब है। इस तरह से आप सारी 12वीं कक्षा की किताबें यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो चलिए हम साइकोलॉजी की किताब देखते हैं। Bharatiya Samaj Class. Download button. Psychology Class 12 NCERT, Training, ये National psychology की Council of किताब है। Educational Research. And we are going to double tap on the download button. Download button. Navigate up button, out of list. Biology Class 12 NCERT, National Council of Education. Psychology Class 12 NCERT, Training, National Council of Educational Research. Bharatiya Samaj Class 12. Download button. Navigate up button, out of list. ये बुक डाउनलोड हो गई है। Biology Class 12 NCERT, यहाँ National से हम Council of back चले Educational जाएंगे Research Training, in list. और दोबारा बुक शेल्फ में चले जाएंगे। Categories. So we're going back Navigate to our up button. bookshelf. Enter author button. Enter 12 edit box. Reader. Psychology Class 12 NCERT 11:39:22 Training in list. तो as you saw कि यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी की किताब जो माई बुक्स है उसके अंदर डाउनलोड हो चुकी है। पहले सिर्फ ये एक बुक थी प्राइड एंड प्रेजुडिस। Pride and Prejudice 12:34:14 Jane Austen. अब उसकी जगह पे Psychology Class 12 NCERT इस साइकोलॉजी की भी किताब हमें 11:39:22 देखने Training. को मिल गई है। तो हम साइकोलॉजी की किताब को डबल टैप करके ओपन कर रहे हैं। Reader. Navigate up button. तो जब हम ये साइकोलॉजी की किताब खोलें तो उसमें हमें ये बुक खुल गई, पर याद करिए हमने अभी भी वो वॉइस डाउनलोड नहीं करा है जिससे हम ये किताब को पढ़ पाएंगे। तो पहले हम बैक जाके एक बार वॉइस को डाउनलोड करके आते हैं। तो यहाँ से हम बैक कर देते हैं। Remember, we are still not downloaded the voice which will allow us to read the book. So we are going to go back and download the voice now. So we are going to go back now from here. Reader. And we are going Psychology. to more options. 5:36. More options button. तो ये more options में हम Manage my voices in list. Manage my voices में हमें जाना है. So we're going to go back into manage my voices. ये एक प्रोसेस जो है एक ही बार करना है. Reader. Voices. Navigate up button. Voices. English, Australia, Google Text to Speech Engine, more in list. तो ये आपको Google की वॉइस बता रहा है. English, India, Google Text to Speech Engine, more. तो हम Google India वॉइस डाउनलोड कर लेते हैं. Voice settings. Navigate up button. तो इंग्लिश के लिए उसने Google India की वॉइस सिलेक्ट करवा ली हमने. Voice settings. English, India. Select Google Text to Speech Engine, English. Set preferred button. और ये हमें प्रेफर्ड कर देते हैं इसको. So now we are set as a preferred voice for English. Speed. यहाँ पे अभी स्पीड हमें पूछ रहा है कि हमें कितनी स्पीड चाहिए. अगर हमें स्पीड को कम ज्यादा करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं. 20% speech rate is 100. Seat control. So we can adjust the speech rate for over here. 300. Default 100. Decrement speech rate button. इसको कम करने के लिए. Increment speech rate button. Enter text edit box. और यहाँ अगर कोई हम सैम्पल टेक्स्ट लिखेंगे Play button. तो वो हमको प्ले करके बताएगा. ठीक है. तो ये हो गया हमारा वॉइस सेट. So this has set our voice. So now we can go back. Voices. Selected. English, India, Google Text to Speech. Reader. और More now we options can button. go back to our book. Psychology Class 12 NCE. हम अब ये बुक को खोल Reader. रहे हैं. Navigate up button. So अब ये स्क्रीन पे क्या क्या है वो हम देख रहे हैं. नेविगेट अप पे हमारा फोकस है, वहां से हम लेफ्ट और राइट कर रहे हैं. Psychology Class 12 NCERT. ये बुक का टाइटल हमें बता रहा है. दिस इज द बुक टाइटल व्हिच इज बीइंग रेड. Visual settings. अब यहाँ विजुअल सेटिंग्स है. विजुअल सेटिंग्स खास करके उन लोग के लिए है जो पार्शियली साइटेड है या डिसलेक्सिक है, जिसके लिए फॉन्ट वगैरह, फॉन्ट की साइज, वो सारे सेटिंग्स यहाँ कर सकते हैं. चलिए देखते हैं अंदर क्या मिलेगा हमें. Visual settings. Navigate up button. So let's see visual settings. This is mainly meant for people with partial vision or with dyslexia who can see the screen. So let's see what options do we have in this. Visual settings. Cursor settings. ये cursor settings है यहाँ पे. Show spoken word on switch. Show spoken word is on. ये जब on रहेगा तो जैसे जैसे वो पढ़ेगी वैसे वैसे वो highlight होगा. If you kept this as default as the spoken word highlighted, it will highlight each word as it reads. Show spoken line on switch. So line भी जैसे है वो भी आपको highlight करके बताएगा. जो line वो पढ़ रही है वो भी आपको highlight होगी. Cursor position.
Ticked page, radio button. Not ticked, center, radio button. So कर्सर का पोजीशन कहाँ होगा? सेंटर में होगा या पेज के टॉप पे होगा? Highlight style. हाईलाइट स्टाइल किस तरह की होगी? What will be your highlight style? Not ticked, margin, radio button. So you want to highlight the margin, Ticked text, radio button. text, Scrolling. scroll. What do you want to do? All these different settings are there for people who can see the screen. Not ticked page, radio button. Ticked free, radio button. Lines visible. Ticked full, radio button. ना कितनी लाइंस आपको देखना है? कुछ ही लाइंस देखनी है या आपको सारे पेज पे जितनी भी लाइंस है वो देखनी है? तो उसका भी ऑप्शन है, जिससे क्या होगा कि जो लाइन पढ़ी जा रही है सिर्फ वो दिखेगी और आसपास का जो एरिया है वो पूरा मास्किंग हो जाएगा। तो खास करके डिसलेक्सिक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेटिंग है। दिस सेटिंग इज मेनली मेंट फॉर पीपल विद डिसलेक्सिया वेयर इट विल हाइड all other lines except for the line which is being read, so that will prevent distraction. This is also useful for young children who are just starting to read. Not ticked 5, radio button. यहाँ आप कितनी लाइंस डिस्प्ले करेंगे उसका भी सेटिंग है। Not ticked 3, radio button. Not ticked 1, radio button. Text appearance. Font. ये उसका फॉन्ट सेटिंग्स के लिए है। Drop down menu, sans serif. ये किस टाइप का आप फॉन्ट देखना चाहते हो? तो sans serif उसका डिफॉल्ट है। दिस इज द फॉन्ट सेटिंग। So the sans serif font is the default setting over here. 16. अब Increment font size button. कितनी साइज में आप रखना चाहते हो? 16 प्रेफरेबली लोग 18 या 20 भी रखते हैं जिनको लो विजन है। So it depends upon your vision acuity. You can set the size of the font over here. Decrement font size button. Text size. Other text settings, adjust character and line spacing, margins. So ये जो है हर कैरेक्टर के बीच में आप कितनी जगह छोड़ना चाहते हो या वर्ड के बीच में कितनी जगह छोड़ना चाहते हो उसके लिए सेटिंग्स है। दिस सेटिंग इज मेनली फॉर द स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स और टू कैरेक्टर्स और टू लाइंस। Color. This is color. What color do you want your font to be? What color you want your background to be? Theme. This is your theme, overall theme. You can choose a light theme or a dark theme from here. Drop down menu, light. Customize, set colors for So Navigate up button. that is the complete options you get under text settings. There are plenty of settings. I would recommend that for persons with partial vision, you should select these settings, play around with it and see what suits your vision. बहुत सारे settings है यहाँ पे, तो हमारी राय जरूर रहेगी कि जो partially sighted है या dyslexic है उनको जरूर इसमें कोशिश करनी है कि अलग अलग settings को try करें और अलग अलग सेटिंग्स को देखें कौन सा सेटिंग उनके लिए सूटेबल है। हो सकता है जो सेटिंग दूसरे के लिए है आपके लिए ना हो, तो वो आप ट्राई करके यहाँ जरूर देखिए। सो लेट्स गो बैक। Reader. Visual settings. अब उसके बाद है Audio setting. ऑडियो सेटिंग्स। ये स्पेसिफिकली ऑडियो सेटिंग्स जो है टोटली ब्लाइंड के लिए है। तो यहाँ देखते हैं क्या मिलता है हमें। Audio setting. Navigate up button. Audio setting. Audio settings. Speech rate. तो यहाँ से भी आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हैं। This is also where you can control the speed of reading. 140 words per minute. 36% speech. Decrement speech rate button. Increment You speech can rate button. increase or decrease. Accessibility content description for document content. Not ticked, none, radio button. Ticked first few words, radio button. Not ticked full text, radio button. On duck. Ticked pause, resume, radio button. So audio ducking भी हो सकता है if you are reading something, तो you can duck the audio. Not ticked, adjust volume, radio button. Not ticked force accessibility features on, tick box. Pronunciation dictionary, button. This is pronunciation dictionary. Voice. Not ticked, show all, tick box. Not ticked Google text to speech engine, English NG, radio button. So ये जो हमने Google text to speech engine select किया था, वो यहाँ से भी आप select कर सकते हो। Not ticked Google text to speech engine, English GB, radio button. Not ticked Google text to speech engine, English O, radio button. Not ticked Google text to speech engine, English US, radio button. Ticked Google text to speech engine, English in, radio button. So we had selected English India, so it is showing here also. So these are the settings under audio, how you want your audio to behave. तो यहाँ से back Reader. आते हैं। Audio setting. Bookmark. ये bookmark option है, तो bookmark से आप easily bookmark भी कर सकते हैं। कहीं भी text में अगर आपको कोई important चीज लगे तो आप bookmark करके
उसको बाद में दोबारा रेफर कर सकते हैं. This is where you can add your bookmarks to your reading and refer to them later on if you find something important. More options button. Let's see what is there in the more options. ये more options आ गया यहाँ भी देख लेते हैं क्या क्या मिलेगा हमें. Reader on top, reader on bottom. Export highlights in list. So यहाँ से अगर हमने कुछ सिलेक्ट किया है तो एक्सपोर्ट हाइलाइट्स कर सकते हैं. वी कैन सिलेक्ट एंड एक्सपोर्ट certain amount of text. Export all text. We can also export all text. अगर हमने सिलेक्ट नहीं किया है सारी टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट करके txt बनानी है तो we can export that. ये दो ऑप्शंस हमें मोर ऑप्शंस के अंदर मिलते हैं. तो यहाँ से भी बाहर आ जाते हैं. More options button. Bookmarks button. Previous item button. और अभी Author training national. ये जो हमारे स्क्रीन Reader. के ऊपर की Copyright लाइन हमने 2019 देखी. by national. अब नीचे की लाइन में क्या क्या ऑप्शन है वो देखते हैं. बीच में सारी टेक्स्ट रहती है तो Bookmarks button. Copyright 2019 by national. Bookmarks 0 button. 0% C control. तो ये बुक अभी शुरुआत है इसलिए 0% बता रहा है. Button. Button. Play button. ये प्ले बटन आ गया. Next item button. नेक्स्ट Search button. सर्च. 0% C control. Previous item button. Play तो button. ये बॉटम लाइन में आपको ऑप्शंस ये मिल रहे हैं सारे. अब यहाँ से अगर हम प्ले करेंगे तो बुक प्ले करनी शुरू हो जानी चाहिए. Psychology Class 12 NCERT. Training. National Council of Educational Research. Freely distributable material. This notice describes the copy. So this has started playing the book. आप इस तरह से बुक को प्ले करके आप पढ़ सकते हैं. आपने देखा कि ये इंडिया गूगल टेक्स्ट टू स्पीच वॉइस में उसने बुक पढ़ना शुरू किया जो हमने सिलेक्ट की थी. So this is how you can start reading the book and see you have noted that it has started reading in the Google text to speech India voice which we had selected. तो जब ये बुक खुल गई हमने देखा कि प्ले पॉज बटन से भी हम पढ़ सकते हैं. अब थोड़ा सा हम नेविगेशन के बारे में देखते हैं कि ये बुक में नेविगेट कैसे कर सकते हैं. So what we have seen is we can read by the play pause button, but we also need to find how to navigate within this book. तो जहाँ पे आपका जो लेफ्ट साइड बॉटम है वहाँ पे आपको Title, author, bookmarks button. बुकमार्क्स बटन करके एक बटन मिलेगा. यहाँ पे जब आप डबल टैप करोगे Chapters. so when you double tap on the button called bookmarks which is there on the left bottom side of your screen, this should open your table of contents. When it opens your table of contents, you can scroll down. Notice 0% in list. So this is notice. See forward 1.0%. Preface, the Little Fish 1. Textbook Development Committee Chief Advisor. Note for the teachers 2.5%. Note for the students 3. Contents 3.9%. मैं left to right Constitution of India 3. Chapter 1 Variations in Psychological Attributes 4.1%. So I swiped from left to right and found chapter 1. So let us double tap on chapter 1 जिससे वो double chapter 1 खुल जाना चाहिए. Navigate up button. After reading this chapter. तो ये Chapter 1 Variations. chapter 1 open हो गया. So now our focus has come straight to chapter 1. Now even here there are different ways of reading it. Either you can read it via the play pause button or you can use your talkback navigation settings to read continuously, or you could read by word or by line or by character. तो यहाँ पे आप प्ले पॉज बटन से पढ़ सकते हैं या फिर आपके टॉकबैक के जो नेविगेशन सेटिंग्स है जैसे रीड फ्रॉम नेक्स्ट आइटम जिससे कंटिन्यूअस रीडिंग होगा, या रीड बाय लाइन एक एक लेफ्ट टू राइट स्वाइप करके वर्ड बाय वर्ड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ये सारा मुमकिन है. तो चलिए देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं. सो लेट्स सी हाउ वी कैन रीड वर्ड बाय वर्ड एंड लाइन बाय लाइन. सो राइट नाउ मैं Visual settings. स्क्रीन के Chapter 1 नीचे Variations. चैप्टर 1 वेरिएशंस जहां स्क्रीन के बीच में है वहां हमने उंगली रखी. अब वहां से लेफ्ट टू राइट स्वाइप करते जाएंगे. After reading this chapter. तो ये एक एक लाइन उसने पढ़ी. Understand psychological attributes on. So now I'm swiping left to right and it is reading one Learn line. about different methods. Explain what constitutes intelligent. Learn how psychologists assess. Understand how intelligence has. Understand the difference between. Introduction. Navigate up button. Explain what constitutes intelligent. So now this is how you can read line by line. Now you can also read
word by word. So let's open the local navigation. Local context menu. Characters. Words. And I've selected words. Learn about different methods. Explain what constitutes intelligent. तो अभी Explain what constitutes ये word by word पढ़ रहे हैं हम. intelligent. Learn. अगर intelligent का character by character word देखना है, Learn. 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 Intelligent. तो let's swipe back to characters. Local context menu. Characters. Characters. E. X. P. L. A. I. N. Space. W. H. A. T. Space. ये character by character हम पढ़ सकते हैं और फिर से दोबारा हम default कर देते हैं उसको. Local context menu. Default in list. And then we Default. can also use the play pause 0% button. C control. Chapter 1 Variations in Psychological Attributes. So, Chapter 1 Variations in Psychological Attributes. 0% C control. Play button. तो ये play करेंगे. This notice describes the copyright ownership, if any, and This is any how legal you can restrict. start reading in different ways using voice dream reader. Now voice dream reader का एक दूसरा भी ऑप्शन है कि जहां आप अगर ईमेल में कहीं आपको वर्ड फाइल मिलती है या पीडीएफ फाइल मिलती है तो वो अटैचमेंट के ऊपर भी आप डबल टैप करके डायरेक्टली वहां से आपको ओपन विथ का ऑप्शन आएगा और ऑप्शन ओपन विथ के अंदर आप ओपन विथ वॉइस ड्रीम रीडर करोगे तो वो वर्ड फाइल या पीडीएफ फाइल आपकी जो बुक शेल्फ है, मेन स्क्रीन है, वहां पे आके सेव हो जाएगी और फिर दोबारा आप उस फाइल को, वर्ड फाइल को या पीडीएफ फाइल को भी बिल्कुल इसी तरह से खोल के आप प्ले बटन से वर्ड बाय वर्ड या कंटिन्यूअस रीडिंग से पढ़ सकते हो. Now there is one more advantage of voice dream reader is you can open your PDF or word files which you might receive from emails as attachments. So you just need to double tap on the word file or the PDF file and then under the open with options choose voice dream reader. The moment you choose voice dream reader, that file will be saved in your my bookshelf, which is the main screen, and then you can open that file again and use your play button or word by word or line by line option to read any word or PDF document. Hope this has been useful to you and you should be able to have one more option for reading Bookshare content or Word or PDF files. उम्मीद करते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेशन से आपको वर्ड, पीडीएफ और बुकशेयर की जो किताबें हैं वो पढ़ने का एक और जरिया प्राप्त हुआ है. Great. So after this, let's switch over to the currency applications and let me invite Neil from the cash reader team to first introduce himself, the cash reader application, and also talk a little bit about what it can do. So come in, Neil, and you can talk both in English and Hindi. You can unmute yourself, Neil. Hi, can you all hear me? Yes, we can hear you nice and clear. Go ahead, please. Yeah, thank you so much. Well, so a little bit about Cash Reader. It is a very general app, to be very honest, and there is nothing unusual in this apart from it has only different thing is that the vibration mode, according to me, and that stands different. Cash Reader जो ऐप है उसमें ऐसी कोई ये नहीं है खासियत कि आप इसको इट इज लाइक अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऐप है और इसमें एक ही खासियत मुझे लगी जो है कि वाइब्रेट करता है. ये एक एडिशनल ऑप्शन है कि जो वाइब्रेट करेगा और आपको करेंसी आइडेंटिफाई करके दिखाएगा अपार्ट फ्रॉम ऑल दी अदर फीचर्स. क्या एंड अगर आपको कोई दिक्कत आती है, फॉर एग्जांपल if it doesn't recognize the currency, okay, I'm straightforward talking about the app because it is very self-explanatory. There's nothing much to talk about. There is in settings there is a button called inspection. Okay, settings के अंदर inspection, photo inspection का एक बटन होता है जहाँ पे आप कोई आपको
करेंसी आपकी अगर रिकग्नाइज नहीं कर रहा है, आप या तो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, तो आप उस बटन को दबा सकते हो और उस बटन को आप होम स्क्रीन पे ला सकते हो, सो दैट जब भी आपको जो भी नोट आपकी रिकग्नाइज नहीं कर रहा है, तो आप उस बटन के ऊपर टैप करते हो तो ये सर्वर पे चला जाता है डेवलपर के। ओके, जब सर्वर पे चला जाता है तो द डेवलपर गेट्स द आइडिया, डेवलपर को ये आइडिया मिलती है कि ये फलाना करेंसी जो है वो रिकग्नाइज नहीं कर रही है। ओके, तो उसके ऊपर काम करना हम शुरू कर देते हैं। या और इसके अंदर तकरीबन 92 कंट्रीज की करेंसीज है। Good. Yeah, So, I think the rest is very much self-explanatory, to be very honest. चलिए तो ये ऐप Very को simple to use. थोड़ा सा उसका डेमो देखते हैं एंड उसके बाद अगर किसी को कोई सवाल है तो क्वेश्चन आंसर सेशन में भी नील हमें उसके जवाब देंगे। Yeah, that will be better, I think. So let's go to the demonstration, और इसका डेमोन्स्ट्रेशन हमें बुकशेयर टीम से सिया डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, हिंदी में वो बताएंगी और हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। So now it's going to be Sia who's going to demonstrate the cash reader application, which according to Neil can recognize currencies for more than 92 countries. So let's go over to Sia. Sia? थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर। ओके, नमस्ते, मेरा नाम सिया है, मैं बुकशेयर मेंबरशिप टीम से बात कर रही हूँ। हेलो, आई एम सिया बनकर फ्रॉम बुकशेयर मेंबरशिप टीम। आज मैं आपको 3 एप्लीकेशंस के डेमोन्स्ट्रेशन देने वाली हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कैश रीडर से। गिव मी अ मिनट, मैं ये शेयर करती हूँ। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके, गुड। सो लेट्स स्टार्ट विद कैश रीडर। Cash reader. सबसे पहले आपको बता दूं कि कैश रीडर आपको ये एंड्रॉइड फोन जो है उसमें प्ले स्टोर में आराम से मिल जाएगा, और इसका एक फ्री वर्जन भी है, लेकिन आपको अगर इसके सारे फीचर्स इस्तेमाल करने हैं तो आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। So ये जो Cash reader. application Preparing US is dollar. there for both Android as well as iPhone, and it is meant for both free use as well as subscription use. In order to use all the features, you need to subscribe to the cash reader subscription. ओके, सो अभी आपने देखा होगा कि ये अभी कुछ डिटेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये ऐप मैंने ऑन कर दिया है तो ये कर रहा है। ये बीप इसलिए होता है कि अगर आप अनअवेयर है कि ये ऐप आपने खोल के रखा है, तो ये बीप आपको इन्फॉर्म करता है कि ये एप्लीकेशन ओपन है। अगर आपने गलती से ओपन कर लिया, या अगर कोई करेंसी डिटेक्ट नहीं करने के लिए कुछ है, तो उस समय भी आपको ध्यान में आएगा कि इट्स रेडी, कि आप अभी आपकी करेंसी जो है वो इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। So the moment you start this application, it starts vibrating. It gives you this beeps, which informs you that the application is open, but it is not able to see any currency at this point in time. So till it sees a currency, it keeps on beeping like this, and it provides you the feedback that it is ready for recognition, and now you should bring some currency in front of the camera. राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। Identifying US dollar. डिफॉल्ट यहाँ पर अभी ये आइडेंटिफाई यूएस डॉलर किया हुआ है, हम सेटिंग्स में जाकर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ इस अभी अगर आप देख रहे हैं कि ये स्क्रीन जब मैंने ऑन किया तो इसमें ऊपर में आइडेंटिफाइंग यूएस डॉलर लिखा है जो डिफॉल्ट है। उसके बाद में एक स्क्रीन है, Settings button. सबसे नीचे स्क्रीन पर सेटिंग बटन है। तो जब हम ये ऐप हम ऑन करते हैं तो हमें सिर्फ 2 बटन्स, एक जो अनाउंस करता है आइडेंटिफाइंग यूएस डॉलर या जो भी करेंसी हो वो आपको बताएगा, और नीचे सबसे नीचे स्क्रीन पर सेटिंग का ऑप्शन रहेगा, और बीच में स्क्रीन होती है जो डिटेक्ट करेगा, स्कैन करेगा आपकी करेंसी को।
So when you open the screen, the default currency which it identifies is US dollars, but you can set it to any currency or from the 92 different options that you can identify using currency cash reader. On the screen, there will only be two pieces of information. At the top, it will tell you the name of the currency which is currently being identified. And at the bottom, there is this option for settings. In the middle, the screen is reserved for viewing the currency which is being scanned. ओके तो अभी हम सेटिंग्स के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है. So we're going into settings to just see what options. Okay. Settings. Recognition disabled. Heading 1 of 16 in list 16 items. Select the currency currently identifying US dollar 2 of 16. So जैसे ही हम लोग सेटिंग्स के अंदर गए तो सबसे पहला ऑप्शन आया है +918698 full version. You are select the current. सबसे पहले आया ऑप्शन Navig setting. Recognition disabled. Heading 1 of 16 in list 16 items. रिकग्निशन का ऑप्शन आया है. उसके अंदर क्या है हम देखते हैं. Select the currency currently identifying US dollar 2 of तो 16. सबसे पहला ऑप्शन आता है सिलेक्ट द करेंसी. जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट दिया है यूएस डॉलर. हम देखते हैं इसके अंदर क्या है. So Select currency. there are Navigate lots up of button. options under settings, and the first option is select your currency. So if you want to select a particular currency for a particular country, this is where you need to go and select your currency. So मैं अभी इसके अंदर जाती हूँ और देखते हैं हम लोग किस तरह से यहाँ पे करेंसी बताई गई है. Let's see. Select currency. Search. आप यहाँ एक सर्च का ऑप्शन है. आप स्क्रीन पर जब हम इसके अंदर जब जाते हैं सिलेक्ट करेंसी के अंदर में तो स्क्रीन पर सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है सिलेक्ट करेंसी. उसके बाजू में रखा हुआ है सर्च ऑप्शन जिसमें आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं कि पर्टिकुलर करेंसी जो आपको सर्च करनी है वो उसमें अवेलेबल है या नहीं. अगर अवेलेबल हो तो आप उसको डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर आगे बढ़कर हम लोग कौन से कॉन्टिनेंट की कौन सी करेंसी दी गई है उसके बारे में जान सकते हैं. So when you open the selection screen, it will take you to the search button. The search button will you can easily use it for identifying and searching a particular currency. Or you could then, if you don't want to do it through the search way, you can swipe and then it will show you currencies as per the continents. So it will give you North America, South America, Africa, Asia, Middle East, all these different options would be there. And under those options, you can find currencies for those particular regions. Right. So क्योंकि हम ये अभी फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो हम देखना चाहेंगे कि इसके अंदर कौन से करेंसी. कुछ करेंसीज हम लोग एटलीस्ट देख सकते हैं सभी ना देखते हुए. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Choose which currency will be identified from the list below. Let us know if your currency is not on the list. Do you need to sort banknotes with different currencies? Use the button at the bottom of the screen to identify all available currencies at the same time. 1 of 103 in list 103 items. So जैसे ही मैंने सर्च ऑप्शन के नीचे एक नोट दिया गया है, जैसे ही मैं आगे वन फिंगर स्वाइप किया मैंने लेफ्ट टू राइट तो वो मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है. आप चाहे तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आप सर्च कर सकते हैं. चाहे तो आप अगर सारी करेंसी जो है आप डिटेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन है तो आप अगर उसे सिलेक्ट करते हैं तो जो भी करेंसी आएगी वो सर्च करेगा ये कौन सी करेंसी है और सेम टाइम पे आपको बता देगा अलग अलग कॉन्टिनेंट की जो भी करेंसी होंगी कि ये कौन सी है करके आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं. वो सबसे नीचे रहेगा. हम अभी आगे बढ़ते हैं. Asia heading 2 of 103. Yes, sir. There's a select all currency, which will also identify multiple currencies at the same time. You can choose, if you don't want to choose a particular currency, but you want to just place any currency in front of it, there's a button right at the bottom of the screen, which is all currencies. You could also choose that. Or if you want a single currency, you just swipe down and select your particular currency. Right. So let's see. Asia है जैसे for example पहले सबसे पहला ऑप्शन है. Indian rupee 3 of 103. Indian rupees है. Afghani 4 of 103. Chinese yuan 5 of 103. Hong Kong dollar 6 of. Indonesian rupiah 7 of 100. Japanese yen 8 of 100.
Kazakh 10 9 of 103. Now, as a sighted person, मैं यहाँ पर ये सारी जो करेंसीज के नाम दिए ये मैं देख भी सकती हूँ, तो मैं थोड़ा सा जल्दी इसे मूव करती हूँ स्क्रीन को। जैसे अभी आपने देखा कि एशिया में उसने जब हमने सेलेक्ट किया तो उसके अंदर में इंडियन रुपीस, अफगानी, चाइनीज, हांगकांग डॉलर, WhatsApp इस तरह checking से for new message. यहाँ पर ऑप्शंस आए हैं। हम आगे बढ़ते हैं। So as you saw, it is Thai baht, reading out all the Vietnamese names dollar. Showing items 20 to of 30. the different currencies. It's showing the Indian rupee, Afghani, Indonesian, Chinese yuan, Japanese yen. All these currencies are being identified over here, and you could select one of these. So we are going to swipe down quickly and select one of the currencies. Yes. So हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। Europe, Norwegian, Africa, heading. Shoreline, Egypt, Rwanda, North America, heading. Central America and the Caribbean, heading. Costa Rican colon. South America, heading These are the 75 different of 103. Worldwide currencies. Showing items 72. So what we can do is now we can select the Indian rupee and start seeing if it is recognizing the Indian rupee properly or not. So ये कुछ कॉन्टिनेंट्स के नाम बताए जिसके अंदर में काफी सारे करेंसीज के नाम दिए गए, उनमें से आप कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन करेंसी से स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रॉल करती हूँ ऊपर इंडियन करेंसी पर और उसे सेलेक्ट करती हूँ और कुछ करेंसीज है मेरे पास में। देखते हैं ये किस तरह से आइडेंटिफाई करता है, पर उसके पहले मैं आपको बता दूं जो आपको फीचर में बता रही हूँ। Lebanese pound. Show insert cash reader compares your banknote with 550 banknotes of all currencies it can identify. Therefore, it is necessary to show as much of the banknote as possible to achieve the correct identification. Hold your phone in one hand and a banknote in the other hand. To be sure that your back camera is pointed at the banknote, place the hand in which you hold your phone on the wrist of the hand in which you hold the banknote. This approach is easy and creates an ideal distance for reliable identification. So, अब जैसे आपको यहाँ ये बता रहा है कि ऑल करेंसीज एट वंस के अंदर में कि इनके पास में तकरीबन ये 550 जो बैंक की नोट्स होती है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए आपको करना क्या होगा कि एक हाथ पे अपना एक फोन आप पकड़े और करेंसी जो है वो जो बैक कैमरा होता है, जो रेयर कैमरा जिसे हम कहते हैं, उसके तरफ में आपके मोबाइल को आपके दूसरे हाथ में अगर नोट है या नीचे कहीं आपने टेबल पे रखा है तो आप उस नोट की तरफ में आपका जो बैक कैमरा है वो करे पॉइंट आउट और वो आपके लिए रीड करेगा। So the instructions are there how to use and how to place the phone to identify the currency. What it says is use the rear camera or the back camera to identify the currencies. And it is also saying that for a better identification and to mark the distance, put the bottom end of the phone on the wrist of the other hand where you're holding the currency. That would be a good distance at which you could have your camera to identify the banknote. So it's explaining you the method in which you should be holding the camera for a better recognition if you are a totally. Okay. Next. Select all currencies at once now. आप select करके जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो आप फीचर ऑन कर सकते हैं। So here you can select multiple. Navigate out of list. So we are going to select a few currencies which we are going to demonstrate quickly. Indian rupee is one, and we are also going to demonstrate Filipino and also Pakistani. So we are going to do this 3 currencies in interest of time. So let's start with the Indian currency. Indian rupee in list 103 items. Navigate. Settings. Select. Settings. Select the currency currently identifying US dollar 2 of 16 in list 69. Select Indian. Okay. Cash reader 10. Okay. 10. जैसे ही मैंने इंडियन करेंसी जो है वो सिलेक्ट की तो सिलेक्ट करते ही ये ऑटोमेटिक होम स्क्रीन पर आ गया जिसमें आपको सबसे पहले वो बताएगा कि इस समय में वो कौन सा करेंसी आइडेंटिफाई करने वाला है जिसे हमने सिलेक्ट किया है। और क्योंकि मैंने ऑलरेडी
Expect rain at around 1 p.m. in ऑलरेडी Pune. मैंने 10 रुपीज का एक जो नोट था मैंने टेबल पर रखा था, तो वो इमीडिएटली उसने डिटेक्ट किया कि वो 10 है, लेकिन वो आपको करेंसी का नाम नहीं बता रहा कि वो रुपीज है या डॉलर है, वो नहीं बताएगा, पर वो करेंसी कितनी की है वो जरूर आपको बताएगा. So basically what happened, selected Indian rupee, the focus came back to the home screen and it started identifying. There was a 10 rupee note lying on the table and it immediately said 10, identifying the 10 rupee note. It does not announce rupees or any other thing because we have selected Indian rupees. So it knows that we are scanning for Indian rupees. Hence it is only announcing the digit 10 to identify the Indian rupee note. एक और करेंसी हम ले लेते हैं इंडियन करेंसी की ही, जैसे न्यू करेंसी लेते. मैंने जो अभी 10 रुपीज लिया था ये ओल्ड करेंसी थी, अभी न्यू करेंसी इंडिया में आई है, मेरे पास में एक और करेंसी है. देखते हैं कि ये इसे आइडेंटिफाई करता है या नहीं. So now we're going to try 100. currency. 100. So this is a 100 rupee 100. note. 100. Usne immediately it identified it as the 100 rupee note. So it is pretty good with recognizing both the old as well as the new bank notes in India. Okay. आपको एक और चीज बताना रह गया कि आपने, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, जैसे ही आप ये एप्लीकेशन ऑन करते हैं तो जो उसका स्क्रीन है वो उस पर वो जो भी आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, रेयर कैमरे के सामने दिखता है और वो हमें अवेयर करवाता है बीप करके कि आपका ये एप्लीकेशन ऑन है अगर आपने गलती से ऑन कर दिया है. और साथ ही साथ अगर आप कोई करेंसी डिटेक्ट कर रहे हैं तो वो बीप करने के साथ साथ वाइब्रेट करेगा, और अगर वो करेंसी वही रखी हुई है तो वो कंटिन्यू आपको रिकॉल करवाएगा कि वो 100 की नोट है या 10 की नोट है, तब तक वो करेंसी जो है वो वहां से आप उसके कैमरा से रिमूव नहीं करेंगे. So what this app does is it keeps repeating the name of the digit of the currency till it is in focus. If you remove it from focus, then it stops speaking. And over and above the beep, it also vibrates when it identifies the currency. And that is how you are sure that it has identified a particular currency and it is speaking it for you. नाउ हम लोग कुछ और करेंसी भी ट्राई कर सकते हैं. जैसे सर ने कहा था कि आज हम आपको बताएंगे कोई और कंट्रीज के भी करेंसी के बारे में, जिसमें हम लोग आज यूएस करेंसी के बारे में भी आपको बताएंगे. पर क्योंकि मेरे पास में अभी करंटली ये नहीं है करेंसी, तो MGCHS friends partying face partying. सो उसके लिए मैं करने वाली हूँ कि मैंने कुछ डाउनलोड किए हैं इमेजेस और उन्हें मैंने एक फोल्डर में रखा है मेरे कंप्यूटर पर. हम लोग एक के बाद एक वो इमेज हम लोग उसे रेयर कैमरा से हम स्कैन करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि ये अगर इसके सामने कोई इमेज आती है करेंसी की किसी और कंट्री की भी, अगर हम सिलेक्ट करते हो कंट्री का नाम, तो वो आइडेंटिफाई करेगा या नहीं. So what we are going to now demonstrate, because we do not have currencies of all these countries, we have downloaded images of these currencies from the internet, and Sia is going to point at those images for the different country currencies, and let's see if it identifies the currency properly from there also or not. ओके, सो सबसे पहले हमें सेटिंग्स में जाकर अलग अलग कंट्रीज के नाम हमें करेंसी जो है वो सिलेक्ट करनी होंगी, ताकि हम फिर उस कंट्री का नोट अगर हम सामने रखेंगे तो वो आइडेंटिफाई कर पाए. So we are going to go and select the currency again in the settings. Settings button. Settings. Settings. Recognition. Select the currency. Current. Select. Choose. Pakistan. Sing. Polish. Scottish pound. Like Ugandan shilling. US dollar. Identifying US dollar. ओके, एज अ साइटेड पर्सन, क्योंकि लिस्ट काफ़ी बड़ी थी और मुझे लिस्ट के थ्रू जाना मैंने प्रिफर किया, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी स्क्रॉल कर लिया, जिसकी वजह से आपको टॉकबैक की आवाज़ सुनाई नहीं आई है. फिलहाल मैंने यूएस डॉलर सेलेक्ट किया है, मेरे पास में यूएस डॉलर की कुछ करेंसी की इमेज है, सो हम लोग उसे देखते हैं कि वो वर्क करेगी. So for example, she has selected US dollar under the currency settings, and now she is going to focus her camera on the laptop
where there are different images of different currencies. So let's see if it identifies. Okay, let's start. 5. So it identified this as a $5 note. We are going to sweep to another currency, another denomination in US dollars. She's changing the image on the laptop. Okay, so now आपने देखा कि इसने $5 करके सिलेक्ट किया जब नोट जो थी वो साफ स्ट्रेट करके रखी हुई थी. अब करेंसी का कभी भी दो साइड होते हैं. एज अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन आपको नहीं पता कि कैमरा के सामने आपने जो नोट रखी है वो सामने की रखी है या पीछे की रखी है. तो हमें ये भी देखना चाहिए कि कोई भी साइड अगर हम रखते हैं तो तब वो आइडेंटिफाई करता है या नहीं करता, या हमें पलटाना पड़ेगा उस करेंसी की नोट को. सो मैंने पहले जो इमेज आपको दिखाई थी वो बैक साइड था US डॉलर का $5 का, और अभी मैं फ्रंट साइड रख रही हूँ. देखते हैं ये रीड करता है या नहीं. So each currency has two sides, as we all know. 5. So this 12:03. application identifies both the sides of the currency. You need not place it in the right way. It can be the other side, the flip side of the currency, and still it will identify the currency very well. सेम चीज हम लोग दूसरी करेंसी के साथ में भी हम ट्राई करेंगे कि दोनों साइड वो रीड कर रहा है या नहीं. जैसे अभी हमने US डॉलर का किया, हम लोग नेपाली जो करेंसी है उसको भी चेक करके देखते हैं. तो सबसे पहले मुझे सेटिंग्स में जाकर करेंसी जो है वो नेपाली की सिलेक्ट करनी पड़ेगी. Settings button. Settings. Select the currency. Select currency. Select search. Search edit box. N A showing items 1 to 9 of 23. P showing clear Asia Nepalese rupee. Identify settings Now, button. अभी आपने देखा होगा कि मैंने अभी दूसरा फीचर भी इसका ट्राई करके देखा कि इस बार मैंने स्क्रॉल ना करते हुए मैंने सर्च ऑप्शन की जो की वहाँ सर्च ऑप्शन जो दिया है उसे इस्तेमाल किया. जैसे ही मैंने सर्च ऑप्शन से सेलेक्ट किया तो मुझे कीबोर्ड उन्होंने दिया. मैंने वहाँ पर जैसे ही सिर्फ 2 कैरेक्टर्स जब मैंने टाइप किए NE तो ऑटोमेटिक मेरे पास में फिल्टर करके नेपाली करेंसी का ऑप्शन आ गया. मैंने 1 फिंगर स्वाइप किया, 1 लेफ्ट टू राइट, और मुझे नेपाली करेंसी मिल गई और मैंने उसे सिलेक्ट किया है. So this time we demonstrated the use of the search feature where to find Nepali currency, we just typed NE in the search term and it found Nepali, and we double tapped on that to reach the Nepali currency quickly. So now let's see if it identifies Nepali currency. So she's opening an image of the Nepali rupiah on the screen. Yes. Okay, let's do it. 5. And 5. figured out that this is a 5 rupee Nepali rupee note. मैंने इसमें एक और ऑब्जर्व किया है इस एप्लीकेशन में कि अगर जैसे अब नेपाली है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ करेंसी में रुपीस जो है मिडल में 5 हिंदी में लिखा है, तो मतलब दैट देवगिरी लिपि जो होती है उसमें लिखा होता है, और कॉर्नर पे 5 होता है और एक ही बार लिखा था. जबकि इंडियन करेंसी में अगर आप देखें तो करेंसी के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में 100 लिखा रहता है, तो वो जल्दी डिटेक्ट करता है. अगर आपने देखा होगा तो कुछ सेकंड का टाइम लिया उसने नेपाली रुपीस रीड करने के लिए. वो पूरा स्कैन करता है कि उसे कहीं वो फिगर दिख रहा है और उसके बाद में वो डिटेक्ट कर रहा है. ऐसा ये मेरा ऑब्जर्वेशन है. So what we have observed in the Nepali currency is that in the Nepali currency, the letter 5, which was written in the Devanagari Nepali script, was there only written in the center of the screen on the note. Compared to that, in the Indian currency, it is written on both the edges. So identification of such notes is a little faster. But this is just our observation, and we are doing it using images of the Nepali currency. This is not the actual Nepali currency. So by using it on the actual currency, chances are there that the recognition would be better than what we are doing on the screen. Yes. So next हम लोग इसके बाद में फिलिपिन की भी कुछ करेंसी चेक कर लेते हैं और यूरो भी चेक करते हैं. हम लोग जल्द से जल्द जाते हैं. फिलिपिन ही करते खाली बस. नहीं करें? ओके, फिलिपिन कर लो खाली. यूरो रहने दो. फिलिपिन
फिल इन करते हैं। ओके, सो लेट्स ये डिफॉल्ट जब हम लोग कोई करेंसी डिटेक्ट करते हैं तो डिफॉल्ट जो है सेटिंग्स ऑप्शन के ऊपर ही इसका फोकस होता है, तो हमें सिर्फ डबल टैप करना होता है और सेटिंग्स के अंदर हम एंटर कर पाते हैं। To identify the Settings. Filipino Navigate. peso Settings. for our While I Philippines select participants to just show Okay. them that their currency is also working with us. Right. select currency. Quickly going Navigate to up. write Philippines. Search. Search edit box. P. Showing items. Philippine peso. Identifying Philippine peso. English India QWERTY keyboard hidden. Cash reader. Settings button. So let's try. So now we're going to open a Filipino peso 20. and 20. it says that this is a 20 peso currency note. So it's doing a pretty good job. So great. This was our first demonstration of the cash reader. Now we're going to do 2 more demonstrations which are going to identify Indian currency notes only. Cash reader is the international currency reader. So for those people in different countries or for those people who keep on traveling to different countries, this is a wonderful application to always have on your phone. Before ending, money, हाँ, बोलिए sir. बिफोर सर ये खत्म करने से पहले सेटिंग्स के अंदर कुछ और भी फीचर्स है। हाँ, वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कर लिया था। Sorry, हाँ, मैं बता जल्दी दूँ। देख लो। Settings. Setting. Recognition. Select full version. You are using the full version with a monthly जैसे plan. मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि ये आपको फ्री ऐप मिलेगा लेकिन उसमें आपको सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं, उस वजह से आज डेमोन्स्ट्रेशन देना था तो मैंने इसका एक मंथली प्लान लिया है जो कि मुझे 55 रुपीज में पड़ा है। फ्री वर्जन में भी एटलीस्ट जितनी कंट्रीज यहाँ मेंशन है हर कंट्री की करेंसी की एटलीस्ट 2 नोट्स वो आपके लिए डिटेक्ट करेगा, लेकिन आपको अगर ज्यादा नोट्स डिटेक्ट करने हैं तो आपको इसका मंथली प्लान एटलीस्ट या तो आप लाइफ टाइम प्लान ले सकते हैं इसका, या आप इसका ईयरली प्लान भी ले सकते हैं। उसका प्राइस जो है वो मुझे मैं आपको बताती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। वो नील बता देगा, नील बता देगा, नील बता देगा आगे बढ़ते हैं। So basically this is where you can use you can tell that at the end. Yeah, so this is a subscription based thing and currently subscribe to the monthly plan which is showing here. Next, yeah, next just give me a minute. Vibrate banknote value. App can transform. Vibrate banknote value जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब भी कोई करेंसी सामने आती है और वो डिटेक्ट करता है तो वो वाइब्रेट करता है, बीप भी करता है आपके लिए। और ये फीचर इसलिए है क्योंकि हमने सेटिंग्स के अंदर में इस फीचर को ऑन किया है। डिफॉल्ट भी ये ऑन होता है और विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो वाइब्रेट करे तो उन्हें एक पता होता है कि हाँ ये सब कुछ इसने डिटेक्ट किया है करके। This is the vibration feature which keeps on vibrating as soon as it recognizes any currency. So this is on by default. So the moment your camera focuses on any currency, it will start vibrating. So this is what Neil was also explaining, that he likes this feature. He is also a person with blindness. Next. या इवन अगर आपका फोन साइलेंट में भी है उस समय भी ये फीचर आपका बहुत मदद करेगा क्योंकि रिंग नहीं बज रही है या कुछ प्रॉब्लम है आपका, अगर ये ऑन रह गया तो उस समय में आपको ये मदद करेगा बताने में कि कोई एप्लीकेशन आपका ऑन है। स्पेशली अगर आप इसकी बात करें तो ये बताएगा और आप इसे ऑफ कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं साइलेंट मोड में भी। So even in the silent mode, it works pretty well. It gives you an indication that the application is running and you are ready to identify notes. Yeah. Next. Beep while identifying. If you are unaware of whether the app is active and currently identifying banknotes, enable the periodic beeping sound tick box 5 of 16. So this feature मैंने ये इसे ऑन रखा था, डिफॉल्ट भी ये ऑन था बीप फीचर जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। So this is the beep feature which you heard. The moment the app is switched on, it keeps on beeping. So that is over here. If you don't want it, you can remove the tick. This is on by default. Flashlight. Light from your device's flashlight improves the identification rate in the dark. Okay. इसमें फ्लैश लाइट का भी ऑप्शन है जिसे मैंने ऑफ करके रखा है क्योंकि अभी डे टाइम है। आप चाहे तो इसे ऑन कर सकते हैं।
स्पेशली अगर डार्क मोड है और आप कोई करेंसी डिटेक्ट करें तो ये ज़्यादा एक्यूरेसी से आपका जो करेंसी है वो डिटेक्ट कर पाएगा। ये फीचर आप ऑन ऑफ करके रख सकते हैं। So this is also another good feature. You can turn on the flashlight, and the moment the application turns on, the flashlight will come on for a better recognition. If you're not sure about the lighting conditions, if you're totally blind, this is a good feature where you can keep your flash on for better recognition quality. Okay, next feature. Send us photo for inspection. You can enable a button to appear on the main screen to send us photo for inspection. Tap the ओके, दिस फीचर ये एक बहुत मुझे कमाल की फीचर लगी, जो बाकी जो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने वाली वो 2 ऐप में मुझे नहीं दिखा। मान लीजिए करेंसी चेंज हो गई फॉर एग्जांपल, ऐसा मुझे लगता है उसमें ये काम करेगा, या कोई चीज, कोई फोटो है जो आपके सामने आपने कोई करेंसी की रखी है वो डिटेक्ट नहीं कर रहा है। इस फीचर को अगर आप ऑन रखते हैं तो शुरुआत में जैसे मैंने कहा था, जब भी आप होम ऑप्शन में जाते हैं, करेंसी ये ऑप्शन अगर ऑन रहेगा और आप ये ऐप ओपन करेंगे तो उसमें ये फीचर ऑटोमेटिक सेटिंग्स के पहले दिखाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट स्वाइप करना है बॉटम टू अप, और आई थिंक ये जो भी इमेज रहेगा, जो फोटो रहेगा, वो डेवलपर्स के पास जाएगा और वो आपको कुछ समय के बाद में आइडेंटिफाई करके या जो भी उसका उनका प्रोसेस होगा वो आपको कुछ ना कुछ उसके रिजल्ट देंगे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। कई बार डिटेक्ट नहीं हो पाती करेंसी, ये काम आएगा। So this identification feature explained by Nilesh that it submits the image of the banknote which is probably not identified correctly, and you can submit it to the for future identification. So that is meant for that. Next. Next. Support disabled, heading 8 of 16. Send a download link to your friends. Do you know somebody who could use cash read? ओके, नाउ सपोर्ट। अगर आपको ये अच्छा लगता है एप्लीकेशन तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए अपने फ्रेंड्स को इसकी लिंक भेज सकते हैं। सोशल मीडिया जैसे कि आपका व्हाट्सएप है, आप ईमेल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं इसके थ्रू। So this is for sharing the application. You can share it with your friends by using this feature. You can share it on your social media. Okay, next है Send email to Alex if you have trouble using our app or if you have any ideas for improvements. Just write us an email 10 of 16. लाइक जैसे कहा था, अगर आपको ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत जा रही है तो आप इन्हें ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ कोई एलेक्स है जिनका ईमेल आप डायरेक्ट कर सकते हैं इस फीचर का इस्तेमाल करके, जो आपको मदद करेंगे। So this is how you can write directly to the developer Alex and give some feedback if you want to share some feedback with them. It should open an email directly. Next. Rate Cash Reader. If you're happy with the app, please. आप इस एप्लीकेशन को रेट कर सकते हैं इस फीचर का इस्तेमाल करते हुए। So this is for the Next. Privacy Play policy. Store. And then there is privacy policy. Yes. And Application version 1.18. this is your application. एप्लीकेशन वर्जन। यस यस प्लीज सर। Okay, good. Finish. ओके, आगे। Social media disabled. Open Cash Reader on Facebook. Open Cash Reader on Twitter 60. ओके, सो इसके बाद में सोशल मीडिया की भी कुछ ऑप्शन दिए आगे, जिसमें आप फेसबुक पर डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं इनका जो फेसबुक पे अकाउंट है, और साथ ही साथ ट्विटर पे भी आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये फीचर्स को इस्तेमाल करके देखा। आपको इस ये जो इनके सोशल मीडिया जो है, इनका फेसबुक है या ट्विटर है, इसमें काफी सारे लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जिन्हें इसका फायदा हुआ है या कुछ बताना चाहते हैं वो डेवलपर्स को, तो इस फीचर्स के द्वारा भी वो बता सकते हैं। So these are the social links where you can directly go to the Facebook or the Twitter handle of Cash Reader, and you could read views from others, or you could give your own views or experiences. That's it, sir. Okay, Navigate so, up button. So let's switch to Identify. another app now. Yes. नेक्स्ट एप्लीकेशन पर हम अभी जाएंगे। Just give a minute. Home screen 1 of 2. Search with start with money. Cash Reader. Kitna. कितना, ये एक और एप्लीकेशन है। कितना बहुत सिंपल एप्लीकेशन है
इंडियन करेंसी के लिए मुझे ये एप्लीकेशन, अगर मेरी बात करें तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। छोटा सा है, ज़्यादा फीचर्स उसमें कुछ है नहीं। ये एक केरला की तरफ से एक टीम है, क्यू बस टेक्नोलॉजीज, उन्होंने ये बनाया है। So now we're going to talk about Kitna application, which is meant for identifying Indian currencies. And this is developed by a team from Kerala in India called QBus Technologies. Let's open this. Kitna, unlabeled. Now see, अगर जब मैंने ये एप्लीकेशन को ओपन किया तो सिर्फ एक स्क्रीन आई है जो स्कैन करने के लिए तैयार है बिल्कुल करेंसी को। जैसे ही मैं इसके सामने करेंसी रखती हूँ, ये इमीडिएटली रीड करना शुरू करता है, ठीक वैसे ही जैसे कि कैश रीडर ने किया है। देखते हैं इसकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है और ये कितना टाइम लगाता है। ₹100. तो मैंने इसके सामने नई करेंसी रखी थी 100 रुपीज की, जो मेरे पास अवेलेबल है। ₹100. और ये थोड़ी थोड़ी देर में अगर बोलना शुरू कर देता है, अगर हमने करेंसी को वहां से मूव नहीं किया तो। So it's the most simplest interface where you don't have to do anything, just push the currency in front of the camera and it should start identifying it. So what Sia used was a 100 rupee bank note and it said 100 rupees. It keeps on repeating till the currency is in focus. When you remove the currency focus, it will stop. नेक्स्ट एक ट्रायल के लिए हम लोग 500 की मेरे पास एक करेंसी है, हम देखते हैं कि ये रीड कर पाता है या नहीं। ₹500. So next we identified a 500 rupee note, which also recognized pretty well. Yes. ये इंडियन करेंसी के लिए ये एप्लीकेशन काफी अच्छा है, लेकिन अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, आपको कोई और करेंसी चाहिए, तो उस समय में आपको कैश रीडर बहुत बहुत मदद करेगा। उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और इसकी एक्यूरेसी इंडियन करेंसी के लिए काफी अच्छी है। इंडियन करेंसी काफी अच्छे से रीड करता है। इसमें बस यही एक फीचर है। That's it. So this is one of the most simplest applications for demonstration. There is nothing much, no buttons, nothing. You just open the app and push the note in front of the rear camera and it should read for you. One of two. Limited to Indian currencies. Only Indian currency. Third one, which is also for Indian currencies. Cash read, money. ये जो एप्लीकेशन है ये आरबीआई के द्वारा बनाया गया है, ऐसा प्ले स्टोर में बताया गया है। और मैंने इसे टेस्ट करने के लिए वहाँ कुछ वेबसाइट एक दी हुई थी, तो नाम नहीं दिया था वेबसाइट का। मैंने उसे क्लिक किया तो ये मुझे आरबीआई की ही वेबसाइट पर लेकर गया। तो आई थिंक ये आरबीआई द्वारा ही बनाया गया है। देखते हैं कि इसके अंदर में क्या फीचर्स है। This application has been developed by the Reserve Bank of India to help the visually impaired in India. Scan currency. Now, जैसे ही मैंने ये ऐप ओपन किया तो इसने सबसे पहले कहा है कि स्कैन करेंसी, जिसमें एक स्क्रीन दिया गया है। स्क्रीन के ऊपर में ही कुछ फीचर्स कुछ दिए गए। आपने देखा कि उसे करेंसी नहीं मिला तो उसने कहा मुझे कि ट्राई अगेन करके, तो उसने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। लेट्स सी कि इसके अंदर में क्या क्या फीचर्स है। So the moment you open the current money app, it opens currency identification mode, and if it doesn't find any currency, it keeps on repeating, try again. Yes. So now, मैंने एक Try again. Just give me a minute. Home. Scan currency. I have some issue, like मेरा टॉक बैक जो है इसके साथ में जब मैं स्वाइप कर रही हूँ वन फिंगर लेफ्ट टू राइट, तो ये नहीं हो रहा है फीचर्स पर। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि करेंसी दिखाओ, पहले करेंसी आइडेंटिफाई करना दो। ₹10. ₹10. मैं एक चीज बताना भूल गई थी, जो मनी ऐप में भी है और साथ ही साथ कितना में भी है। जब ये करेंसी रीड कर रहा है इंडियन करेंसी, तो साथ ही साथ वो कह रहा है वो रुपीज है करके।
क्योंकि यहाँ आई थिंक Try कोई और again. ऑप्शंस नहीं है, कोई और करेंसी डिटेक्ट करने का, शायद इस वजह से वो प्रॉपरली बोल रहा है कि ये रुपीज ही है करके. So we saw that it identified the currency and announced it as rupees, 10 rupees. Okay. And this app there is some issues with talkback in the phone that Sia is using. So it's not Just allowed. give me a minute. The Just menus. give me a minute. मैं इसे ऑन करके देखती हूँ सर एक बार फिर से. Just give me a minute. Back. Home screen 1 of 2. Money. Screen off. 12:20. Pin unlock. 4. Enter button. Device unlock. Scan currency. So this is one little bug that we have found with this application. 500 rupees. It is identifying the currency, but compatibility with TalkBack is a little poor on the Home screen 1 of 2. using. Money. Okay. Okay. Sir, See, I think मैं it कुछ is not. बताना चाहूँगी. हाँ बताओ. Right now it's not working. इसके जो हम लोग टॉकबैक के साथ में यूज करें तो ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन जब मैंने कल इसे ऑन किया था तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा था टॉकबैक के साथ में. मे बी क्योंकि हमने इसे कनेक्ट किया है अभी, शायद उस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है. तो मैं वर्बली आपको इसके बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा. इसके अंदर में टॉर्च ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है जो स्क्रीन पर जैसे स्कैन करेंसी होता है. तो फिलहाल अभी ये वर्क नहीं कर रहा है. इवन एज अ साइटेड पर्सन अगर मैं टच भी कर रही हूँ तो फिलहाल ये वर्क नहीं कर रहा है, अदरवाइज ये वर्क करता था. नेक्स्ट है मेन्यू बटन, जिसके अंदर में आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, हिस्ट्री ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऐसे काफी सारे फीचर्स है. और वॉइस कमांड है इसमें. अगर आप वॉइस कमांड देना चाहते हैं पर्टिकुलर किसी पेज पर जाना है, चाहे आपको हिस्ट्री देखनी है आपकी या करेंसी पर आना है, तो आप वो भी कर सकते हैं. मैं इसे ऑफ कर देती हूँ क्योंकि ये बार बार ट्राई अगेन कह रहा है तो बात करने में दिक्कत जा रही है. So इसके अंदर में home screen 1 of 2. So there is a torch option. So you can turn it on and off also for better recognition, as we saw with flash reader. Sorry, cache reader. And there is also the menu option. So the menu option allows you to select different settings, including navigate by voice. So you can use the voice to navigate within the money application. But as we saw with the Samsung phone, it is showing us some difficulty in using the application. Okay. Yes. Apart from this, इसके अंदर में मैंने bugs भी डिटेक्ट किए थे, जैसे आपको बताया था सर मैंने कि आप बता सकते सर उसके बारे में. Good. बताइए. So जब हम ये एप्लीकेशन ऑन करते हैं तो सबसे पहली बात आपने देखा कि एज अ साइटेड पर्सन अगर मैं विदाउट टॉकबैक भी यूज करी तो वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था. टॉकबैक के साथ में भी जब इस्तेमाल करी तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, लेकिन करेंसी वो प्रॉपरली डिटेक्ट कर रहा था. अगर आप इस एप्लीकेशन को ऑन करें और आप अगर उसके सामने करेंसी रखें, आपको करना क्या है कि रेयर कैमरा जो है वो करेंसी के साइड में आपको करना है. करेंसी को थोड़ा दूर रखना है, कम से कम 6 सेंटीमीटर हो, 7 सेंटीमीटर थोड़ा दूर हो वो उससे. और आप जस्ट उसके ऊपर में सामने रखिए करेंसी को रेयर कैमरा के, और वो आपके लिए डिटेक्ट करेगा. इसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है. और दैट्स इट. So that we have to show today in terms of the applications, we have shown you 4 applications: the voice dream reader, cash reader, Kitna, and money. So now we're going to open the floor for questions. लास्ट एक चीज बोलनी थी सर. जी बताइए. इसमें आपने देखा होगा कि कॉइन्स डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है. सो मैं एक्चुअली अपनी तरफ से थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो कितना और मनी तो नहीं कर रहे थे. और कैश रीडर का जब मैंने उनके प्ले स्टोर पे गई और उनके जो डेवलपर्स है वो आंसर्स करते, जब भी आप उन्हें कुछ पूछते तो उनका कहना है कि आने वाले समय में शायद वो कॉइन्स जो है वो भी डिटेक्ट करने के ऊपर में वर्क करे, विच इज अ प्लस थम्स अप पॉइंट है कैश रीडर के लिए कि मे बी शायद कॉइन भी डिटेक्ट कर पाए फ्यूचर में.
फिलहाल तो कोई भी जो एप्लीकेशन है वो कॉइन्स डिटेक्ट नहीं करते, सिर्फ जो नोट्स होती है वो डिटेक्ट करते हैं. So none of these applications identifies any coins. All these applications basically are used for identifying paper notes, currency notes. Cash Reader is the only one which says on Play Store website that it can identify, or if they are developing on it, they are working on it for identification of coins. But right now it's not possible.